Hey guys, good evening. Hello. Hey everyone. Can you guys confirm if you can hear me real quick? Yeah, I think now it has started. Quickly confirm if you can hear me. This. All right. Hey guys. अच्छा जल्दी से कंफर्म करो अगर सुनाई दे रहा. Send a yes. Send a yes real quick. Hi, Aryan, Shivangi, Rohit, Ashima. Hi, Aishwarya. Hello, Aditya. Good evening. Anji, guys. Alright, so this is our third lecture in the practice series. Today we'll be touching algebra. We will be dealing with linear equations, quadratic equations today. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai. I have 6 years of experience teaching quantitative aptitude across different platforms, and I have trained over 2 lakh students so far. Please don't forget to follow hashtag #CatLive daily on Instagram, and yeah, please don't forget to share these sessions with your friends, with your juniors, with your cousins, with your younger siblings, anyone who's planning on preparing for CAT 2021. Please let them know about our channel, let them know what we do. This is our official Unacademy CAT channel on Telegram. Please get yourself added to that. And if you're still preparing, if you're still a little if you're facing a little lack of confidence with respect to CAT or other management entrance exams, sir, I have put all my faith, all my time and energy in one particular place, and I want to ensure that I get a sure shot solution. Then you can prefer any one of these packages. These would help you gain confidence. Right now, CAT, of course, but other management entrance exams as well. Yeah, don't forget to use my referral code Surana Live. With this you would get a discount of 10%. So let's start. So I'll put up a question, I'll let you all solve it, and then we'll discuss the solution. Simple as that. Yeah. Hello Himanshu. Hi Megha. Good evening Ashima. आज भीड़ इतना कम क्यों है? Why? Why? Oh why? चलो कोई नहीं, अपने को भीड़ से क्या लेना देना, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है. Interesting little question.
ट्राई कर रहे हो ना सब? यू गाइज आर ट्राइंग राइट? Guys, now by now all your festivities should have worn off. अब तक जो भी दिवाली, चिल्ड्रंस डे, एनवायरमेंट डे, जो भी जिस किसी का भी नशा था सब उतर गया होगा अब तक तो. Snap back to reality. No answers? Nobody yet? Hi Narshima. क्या हो गया guys? All right. Sameer says D. Okay, if you say none of the above, if you say the answer is none of the above, then also send what could be the solution. Vibhor says C. Debjani says 2. Hi Jatin. Thanks a lot, buddy. Okay, 2, 3, 4, none of the above. What do you think is the solution? Good evening, Vibhor. Okay, let's try this out. Yeah. So there are two cases. We have modulus. That means there would be two cases. One where x should be greater than 0, positive. One where x should be less than 0, right? So let's consider greater than and equal to 0 in this case. Yes. So what do we have? We have 4x plus 3y is 33. Now we could go 3y is equal to 33 minus 4x. Yes. Oh, Sudeep, hi. Superb. Yeah, 3y is 33 minus 4x. Now we know that 33 is divisible by 3. That means whatever you subtract, 3y should be a number. Since they belong to integers, 3y should give us a number that is multiple of 3. 33 is already a multiple of 3. Whatever you subtract from 33 should also be a multiple of 3. Yes. So what would be multiple of 3 here? X could be equal to 0. If x is 0, y is what? 11. Correct? 33 by 3, 11. The next number that is multiple of 3 would be what? 3. Yeah. So 33 minus 12 is how much? 33 minus 12 is 21. That means y would be 7. Again, if x is equal to 6, what would happen? So 2 is out. 2 is out of question. We already have more than 2 answer choices here, right? X is 24. That means this would become 33 minus 24, which is 9. That means x equal to 6, y equal to 3. Yeah. What else? What beyond this? Beyond this, can I have x to be equal to 9? What would happen if x is equal to 9? Y would become negative. Correct? Because 33 minus 36, y would become minus 1. That we can't let happen. Yes. So these would be 3 possible solutions. Now let's try the alternative. What's the alternative? X being less than 0. Yes. Let's do that here. If x is less than 0, what happens here now? If x is less than 0, then all you have to do is replace x with minus x. That's it. Yes. So this would become minus 4x plus 3y is 33, or 3y is equal to 33 plus 4x. Agreed? So 33 is a number that is multiple of 3. Whatever you add to it should also be a multiple of 3. Of course, yes. We can still start with x equal to 0. Y would be equal to 11. We know that. X equal to 3. What would happen now in this case if x is equal to 3? So this is duplicate. This is repetition. This is duplicate. This can only be counted once.
So far we have only 3, right? Now what happens if x is equal to 3? हाँ हो सकता है, yeah, exactly. Nowhere does it say that y cannot be less than that. Of course, I'm sorry. Yeah, y could be negative also. Yes, there is no condition given for y also. Y could be positive, could be negative, could be 0, anything. Yes. So with this itself, then in that case itself, this will keep going on, right? This will go till negative infinity. Agreed. Same way here you will have positive infinite solutions. So if x is equal to 3, 33 plus 12 would give you 45, y would be 15. Yes, if x is equal to 6, then y would be equal to what? Next, 18, correct? 24. So you would have 57. That is how much? 19. Yeah, again x is equal to 9, you would have y equal to 23. So this will go till positive infinity. That means the solution set for x and for y go all the way till negative infinity and all the way till positive infinity. This basically means there are how many solutions to this? Infinite solutions to this. Yes, and not 2, not 3, not 4. The answer is none of the above because the answer is infinite solutions. Got it? Samir, very true, very true. You have to look at all of your options. You have to sit and calculate everything that you have, contemplate everything that you have, and then go for nota or go for cannot be determined. Yes, although these have only a 5% risk factor, you never know, right? Probability is not a very correct. Tathagata, definitely. Megha, where does it say that x is greater than? Yeah, x will keep going to positive infinity, no? Y could be negative, x will keep going to the positive infinity. Here in this case, yes, in this case I agree, but here you can try negative values for x. Yes, x could be -3. If x is -3, what would happen? You would have y equal to 7. Yes, if x is -6, then you would have y equal to 3. This will keep going on. Again, this will go till negative infinity, -9, -12, and so on. This positive infinity, this will go till negative infinity. Of course, guys, definitely. So this line has infinite solutions, right? Infinite integral solutions. Any line will have infinite solutions. Do you understand this? Koi bhi line le lo, if you take any straight line, yes, will definitely have infinite solutions. Yes, but integral solutions, integral bhi matter karta hai. So in this case, x, y both being integers would have infinite solutions. Quickly try this. Umang, define CAT level. Umang, tell me, what do you mean by CAT level? What is CAT level? Umang, when you say CAT level, you are suggesting कि CAT के सारे questions difficult होते हैं, but ऐसा जरूरी नहीं है. CAT के questions is a good mix of difficulty level. You would have easy, intermediate, and hard questions. Correct, Tathagata. Definitely. If you are comfortable drawing a graph, then of course, best solution possible, best way possible. Draw graph, get it over with. Definitely works. Probably won't suggest that for a quadratic equation, but for a linear equation, go ahead, go crazy on it. Go ahead, guys. अरे नरसिम्हा काउंटर वाउंटर नहीं किया भाई, बराबर से तो जवाब दिया.
मैं बराबर से ही तो जवाब दिया, काउंटर कहाँ किया। सुपर, समीर, अंकुश, वेरी गुड, वेरी नाइस, विभोर, अभी, नहीं मतलब ये थोड़ा सा प्री डिफाइंड नोशन है लोगों के दिमाग में कि कैट मतलब हार्ड, कैट मतलब नहीं नहीं सर, मतलब ये तो हार्ड ही होना चाहिए, मतलब ये एकदम मुंबई, मुंबई फाइनेस्ट 59, 404, 303 जो भी कहीं से भी है उन लोगों में से है, मतलब बहुत हार्ड तो डेफिनेटली होना, ऐसा जरूरी नहीं, कैट में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इजी होते हैं और कुछ नहीं, है ना। ब्यूटीफुल गाइस, एवरीवन, वेरी गुड। इस क्वेश्चन के लिए इतने टाइम नहीं देना चाहिए, वो दैट आई एग्री, दैट इज अप टू मी, दैट इज ऑन मी, आई अंडरस्टैंड दैट। विभोर, विभोर मैं एल्जेब्रा में कहाँ से लाऊं? एल्जेब्रा में मैं कहाँ से लाऊं, मतलब अब मैं ऐसे अगर पूरा एक्सपैंड कर लूँ उसको कि स्क्वायर ऑफ अ वेरिएबल, difference between difference between square of a variable and absolute value of 7 times the variable is 18, तो मैं इसका आरसी बना सकता हूँ, बनाने को तो आरसी किसी का भी बन सकता है, ऐसा है ना। अगर आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कुछ भी हल्का सा 2 सेकेंड भी अगर आप ऐसे मुंह डाल के आए ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो आप यू आर अ राइटर बाय डिफॉल्ट, कुछ भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रख के आप उसका बना सकते हो। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, अगेन मॉड्यूलस होता है, that means 2 possibilities, x greater than 0, x less than 0, greater than 0 मतलब क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, that means x would be positive only, minus 18 is equal to 0, start solving this, you would have what, 2 possible solutions, x would be equal to 9 or x would be equal to -2, है ना। 9 into -2 -18, 9 minus 2 7, minus of plus 7 -7, yes, but this is not possible. Why this is not possible? Because x has got to be greater than 0. Yes, works the same way with less than 0 also. The only difference would be what, x square minus 7 of minus x. Yes, you understand, right? Do you understand कि modulus 7x is the same as 7 modulus x, क्योंकि this is a constant, positive constant है, तो ये कुछ तकलीफ नहीं देगा। Yeah, this minus 18 should be equal to 0, that's x square plus 7x minus 18 is equal to 0. That's it. So in this case, what would you get? You would get x is equal to 2 or -9, है ना। But since x has to be less than 0, x equal to 2 is not a possibility, so we let this one go. X equal to -9, x equal to 9, 2 solutions, plus or -9, that is our answer. Simple, real simple in fact, है ना। चले आगे, चला जाए, चलो। थैंक यू सो मच आयशा। अरे नहीं नहीं, बेइज्जती कहाँ, आज मैं जो भी हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के वजह से तो हूँ, वरना इमेजिन सी outside of India higher education is better, है ना, बट इन इंडिया द क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एजुकेशन जो मतलब रेगुलर फॉर्मेट है एजुकेशन का, वो एकदम सही है, द स्कूलिंग डिसिप्लिन एंड ऑल दैट इज प्रीटी गुड इन इंडिया। वरना तो देख लो, कोई भी अमेरिकन शो उठा लो, हाई स्कूल, कोई भी हाई स्कूल बेसिस कोई भी अमेरिकन शो उठा लो, गंद मचा रखी बहुत बहुत ही ज्यादा गंद मचा रखी, एंड दैट्स अपेरेंटली ऑलमोस्ट रियल, नॉट एज रियल एज दैट, इट्स लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर वर्जन है सारे, बट स्टिल ऑलमोस्ट एज गुड।
चलो क्विक, राइट अंकुश, JEE एडवांस, दिस इज अ टीटा क्वेश्चन। ये बस दिमाग में रख लो कि टीटा वाले क्वेश्चंस को कभी भी अनआंसर्ड, नॉट अटेम्प्टेड में नहीं डालोगे। मतलब ये शपथ, अग्नि शपथ ले लो, अग्नि शपथ ले लो, एकदम ब्लड ओथ ले लो, ऐसे ऐसे करके ब्लड को ऐसे ऐसे करके नाना पाटेकर जैसे हिंदू का खून, सलमान का खून करके कर लो एक बार के लिए कि टीटा वाला कभी मत छोड़ना, ठीक है। 3,900, 39,000, 39,000, ब्यूटीफुल, 39,000 इज बहुत ही okay. So although this is a linear equation, in two variables आपको दो सेट मिलेंगे, उन दोनों का आपको intersection ढूंढना, that's a very good thing. But what you have to keep in mind is the fact that जितना कम टाइम में हो सके उतना कम टाइम में करना है ना. You'll have to reduce the amount of time that you spend here. So look at this, the cost of 3 TVs. एक चीज ध्यान में रख लो guys, if you are okay with assigning TV को X, laptop को Y, and then not get confused in that you have to be very careful. Okay, my suggestion would be use the initials. Yes, you have 3T plus 7L is 43,500, and you have 1T plus 2L is 12,500. Yeah, you can even keep the zeros aside. If you are good with that, keep the zeros aside. Yes, you can always remember 10 square towards the end of it, but still you got to be careful अगर कर रहे हो तो ऐसा. Now we have two equations, two variables. is कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, right? But you have to reduce the amount of time, है ना. Now look at this, this is coefficients देख लो दोनों का, ठीक है. ये t का और ये l का coefficients देख लो, ये 3 है, ये 7 है, ये 1 है और ये 2 है ना. What I want is 6 TVs and 6 laptops का. What is required is 6T plus 6L की value. This I can get if I can somehow manage to get 1T and 1L, है ना. एक टीवी और एक लैपटॉप का अगर मैं कैसे भी निकाल लूं तो हो जाएगा. Yes, so look at this, the difference here is 1, the difference here is 4. Yes, अगर ये सेम डिफरेंस यहाँ पे भी ला दें, ये सेम डिफरेंस 4 का 4 डिफरेंस यहाँ पे भी ला दें, तो you will get 1 and 1. So what would I do if I multiply this with 4? What would I get? This equation with 4. So I'm going to get 4 times T plus 8 times L is 125 into 4 is 250 into 2, 500. So 50,000. Yes, and the first equation 3T plus 7L, 43,500. Are you getting this? So look at the differences in the coefficient. ये 4 है, ये 1 है. इसको या तो 1 करा दो या इसको 4 करा दो. इसको 1 कराना मुश्किल है क्योंकि then you'll have to do 3/4, 7/4. Fractions वैसे ही पसंद नहीं है ना. तो instead multiply this with 4 and you have it. That's it. Now if you subtract, what would you get? 1T plus 1L is equal to 6,500. What we need is 6 TVs and 6 laptops. मतलब इसको 6 से multiply कर लो. So 6 TVs plus 6 laptops is going to be 65 into 6, which is the same as 130 into 3. That's how much? 390 or 20, 39,000. Got it? तो ये थोड़ा सा जो है टाइम reduce करना है अपने को, right? Reduce the amount of time. Accuracy को उतना ही उतना रखना है. Accuracy को उतना ही उतना high रखना है, but time को reduce करना है बस. तो instead of finding 1T का value and then substituting to find out 1L का value, फिर उसमें आप ये डाल के T and L का 6 करोगे, इससे अच्छा consider this. Yes, so always see if you can manipulate, if you can, you know, have a way around with equations. There's nothing like it. Chalo, quickly try this.
मधु, डेफिनेटली डेफिनेटली बड़ी एक्यूरेसी कम होगी तो डेफिनेटली आपका परसेंटाइल में फर्क पड़ेगा. यस, बियॉन्ड 95, बियॉन्ड 95 हर एक गलत आंसर का आपको असर पड़ेगा, पक्का वाला पड़ेगा. हर गलत आंसर का आपका असर पड़ेगा. एवरी 1/3 ऑफ अ स्कोर दैट यू लूज, लाइक 1 मार्क अगर आप लूज करोगे तो यू विल डेफिनेटली लूज इट, ऑफ कोर्स. Wow, Aisha, very nice, very nice. Sadly, you won't be able to you won't be able to give CAT. If they did have no age limit, like upper age limit तो नहीं है, but अगर lower age limit भी नहीं होती तो definitely एक record बन जाता. Yes. Hi Sonali, good evening. आ जाओ ज्वाइन करो. मधु टीटा में कुछ नहीं है, जस्ट दैट यू विल लूज दैट क्वेश्चन, दैट्स इट, है ना. वो उस क्वेश्चन का जो 3 मार्क आपको आना चाहिए था वो चला जाएगा. अदरवाइज देयर इज नो नेगेटिव स्कोर फॉर टीटा का कोई नेगेटिव स्कोर नहीं है, बट यू विल लूज दिस 3 मार्क्स. दिस विल अफेक्ट योर परसेंटाइल डेफिनेटली. oops. 42, 40 others, we have 42, 40. और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स है. सुदीप, उमंग, अदर्स? सुपर. अंकित, very good. Aisha, Prince. Chalo, so we have what? 2 people, right? There's Relly, there's Kelly. Now let's assume Relly has R toffees, Kelly has K toffees. They're saying what? If Relly takes 6 toffees from Kelly, तो Kelly के पास जो 6 थे वो हमने निकाल लिए और वो हमने दे दिए Relly को, right? 6 toffees. When this happens, the toffees with them become equal. So we have what? K minus 6 is equal to R plus 6, or K is equal to R plus 6 plus 6, 12. ये हो गया एक equation. Now you have another scenario where instead, if Kelly takes 1 toffee from Relly, right? If Kelly takes 1 from Relly, मतलब Relly के पास जो R थे उसमें से एक हमने निकाला और Kelly को दे दिया. ये जब होता है तब क्या होता है? Kelly would have twice the number of toffees as Relly would have. Kelly के पास क्या होगा? 2 times that of Relly. करेक्ट? तो वापस देख लो, K plus 1 is equal to 2R minus 2 और K is equal to 2R minus 2 minus 1 minus 3. ये दूसरा इक्वेशन. अब बस दोनों को सॉल्व कर लो. What would you have? You would have R plus 12 is equal to 2R minus 3, or R is equal to 15. If R is 15, then what would be K? कहीं पे एक में substitute कर लो, यहाँ पे substitute कर लो. So you would get K is equal to 15 plus 12, 27. We have 27, we have 15. They need total number of toffees, that is K plus R, which is 15 and 27. Yeah, superb.
वेरी गुड प्रिंस, एवरीवन वेरी गुड। चलो, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ना। ये लो, ये सारे इजी इजी क्वेश्चंस है, इसलिए फटफट से कर रहे हैं, ठीक है। इस बार क्यूए के कितने क्वेश्चंस होंगे मधु? अकॉर्डिंग टू इनसाइड न्यूज, मतलब ये एकदम IIM इंदौर, ठीक है, IIM इंदौर के बाहर एक है गोलगप्पे वाला, ठीक है, उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन आई है कि इस बार कैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में होंगे, एक प्लेट में जितने पूरी आते हैं ना उतने क्वेश्चंस होंगे। ये पक्की न्यूज है, ये पक्की न्यूज है, ठीक है। ये इसमें से वो जितना सूखा देगा ना, सूखी पूरी देगा, उतना टीटा क्वेश्चंस आएंगे, यस, और बाकी के पूरे MCQ होंगे। ये एकदम डेफिनेट न्यूज है, पूरा 100% ट्रू है ये, ठीक है। आप उन्हीं से पूछिएगा, सीधा कॉल करिए उनको, ऐसे डायरेक्ट पूछोगे तो नहीं दोगे। वहाँ पे सीक्रेट कोड चलता है, ठीक है, वहाँ पे कोड चलता है, कोड लैंग्वेज। वहाँ पे जाके आपको सिर्फ ये बोलना है कि एक प्लेट पानी पूरी दो, एक प्लेट गोलगप्पा दो, तो उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। वहाँ पे आप काउंट कर लीजिएगा कि वो कितने सूखे कितने दे रहा है, बिना पूछे, पूछना नहीं है, पूछना नहीं है, आपको नहीं पूछना है, वो अपने आप, वो मतलब उसको पता चल जाएगा कि शक्ल पे देखेगा ना, शिखर है इतनी, मतलब इतना डाउट है, इतना सेकेंड गेसिंग कर रहे हो खुद को तो बहुत पता चल जाएगा उसको कि कैट एस्पिरेंट हो। उमंग ऑलमोस्ट रोज होती है, ऑलमोस्ट रोज होती है उमंग। ऑलमोस्ट का ऐसा है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को छोड़ के अपनी वाली रोज होती है। अब से शायद संडे को भी होगी बताता हूं मैं कैसा सीन है, कि दिवाली थोड़ी सी लंबी मना ली। अरे अभिमन्यु, सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, एकदम पक्का बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली नॉट टीटा, ये वाला एक्चुअल टीटा नहीं था, ये MCQ ही था। इसमें से मैंने आंसर चॉइस जानबूझ के निकाले, इसमें से मैंने आंसर चॉइस जानबूझ के निकाले, क्योंकि जो लोग 73 बोल रहे हैं, जो लोग 73 बोल रहे हैं, उनका ये असम्पशन है कि 10th प्लेस वाला हर वक्त 1 से बड़ा ही होगा। वाई कांट दिस बी ट्रू फॉर 37? तो जो विभोर ने आंसर दिया है कि 73 और 37, दिस इज ट्रू, दोनों सही है, 73 भी सही है, 37 भी सही है, यस। है ना? अरे विभोर ऐसा वही है ना, मतलब अपना कहाँ छोड़, जाने दो यार, जाने दो, दिस टू मेनी थिंग्स इन्वॉल्व हियर, नहीं गिरेंगे उसमें, राइट। लेट्स क्विकली डू दिस। डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, तो डिजिट ले लो, नंबर है अपना XY, ठीक है, दिस इज आर 2 डिजिट नंबर, दिस इज आर 2 डिजिट नंबर, ओके, XY। तो क्या बोल रहे, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 4, X minus Y is 4, yes। अभी के लिए यही रखो, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 110। तो ये कभी भी ध्यान रखो कि इफ इट्स अ 2 डिजिट नंबर यू कैन राइट इट एज व्हाट, Y तो है ही है, X को जो 10th प्लेस में, यू कैन राइट इट एज 10 plus X, करेक्ट, 10X plus Y। दिस प्लस इसका रिवर्स कर लेंगे, ये 10X plus Y किस फॉर्म में होगा, X Y, ऐसे, ये 10th प्लेस और ये यूनिट्स प्लेस, है ना। इसको अगर रिवर्स कर लिया तो क्या हो जाएगा, y यहां पे आ जाएगा, x यहां पे आ जाएगा, करेक्ट, y x हो जाएगा वो, दैट्स व्हाट, 10y plus x। तो दिस प्लस रिवर्स, दैट इज 10y plus x इज 110, मतलब 10x plus x 11x plus y plus 10y is 11y, this is 110, मतलब x plus y is 10, ये खत्म। x प्लस वाई का पता है आपको, x माइनस वाई का पता है आपको, yes। when you have sum and difference, when you have sum and difference, add both of them
and divide by 2. Add both of them, divide by 2, you will get the greater value. Subtract both of them and divide by 2, you will get the smaller value. Yes. अब यहाँ पे क्या है? The number would be 73, which is okay. It could also be 37. Yes, both are accepted. क्योंकि देख लो 37 difference in the digits 3 minus 7 is 4 only. क्योंकि digit को आप digit number ले रहे हो ना direct. Yes. नंबर 2 37 प्लस 73, 37 जो नंबर है उसका रिवर्स 73, 110 ही है. सो अनलेस एंड अंटिल दे गिव यू दैट द टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन द यूनिट्स डिजिट, ऐसा अगर कुछ दिया हो तो स्पेसिफिक आंसर है, वरना नहीं. तो टेक्निकली इसका आंसर मतलब अगर ए बी सी डी में if you have let's say 73 and some other number, let's say 63, 36 and cannot be determined, तो cannot be determined सही होगा क्योंकि 37 is also possible. Yes, but अगर नोटा है, in case this was nota, then this would not be your answer, this would be your answer, because best answer choose करना है ना, best answer choose करना है. Yes. चले नेक्स्ट चले क्या? हाँ मधु, दैट्स व्हाट 3 minus 4 कहीं पे भी नहीं बोला ना, इनने नहीं बोला ना कि 3 minus 4 करना है. इनने क्या बोला है? 3 minus 7 करना है. इनने नहीं बोला, इनने बोला है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है. तो आप 3 minus 7 ले लो या 7 minus 3 ले लो, डिफरेंस सेम ही है ना. Yes. When they say difference, to be frank guys, whenever they say difference, what they actually mean is the absolute difference. है ना? When they mean difference, what they actually mean is absolute difference, modulus वाला. चलो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये शायद आप लोगों ने एक बार किया भी होगा, बट ये मेरे को बहुत मजा आया. करेक्ट प्रिंस. रजत, बड़े नेगेटिव बंदे हो भाई, बड़े नेगेटिव बंदे हो. इतना नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, इतना नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए. और टू बी फ्रैंक, दिस टाइम वी कांट रियली से एनीथिंग बिफोर हैंड. अभी पहले मैं कुछ नहीं बोल सकते. Right, I can't tell you that if you answer 5 questions, what will be your percentile now, before knowing how many questions are there, before knowing what would be the difficulty level of the questions. All that is in the gray area. There's no black and white this time, है ना? Right, Vibhor says B. Others? Prince says B. All right. हाँ जी guys, बाकी लोग. Rajat says B. Jatin, पता है, you will get used to it. मेरे को भी लगा था टाइम, मेरे को भी लगा था. You will get used to it, buddy, don't worry. वो नहीं पता चलेगा. ऐसे 3-4 और हो जाएंगे ना वीडियो, फिर नॉर्मल हो जाए. No, Aisha, what they are saying is difference in the digits. Our digit is X and Y. Digit is not. So when I say the number, let's say 73, how I can write this is 70 plus 3, correct?
दैट इज वाई दिस बिकम्स 10x प्लस वाई. बट ये लोग क्या बोल रहे हैं, डिजिट्स में डिफरेंस. 7 minus 3 is 4 they are saying, not 70 minus 3. समझ में आ रहा है? ये डिजिट्स अलग हैं और नंबर्स अलग हैं. ठीक है, डिजिट्स 7 और 3 है, नंबर 70 और 3 है. ठीक है, चलो ये वाला किया जाए. करेक्ट करेक्ट सुदीप. सुपर एवरीबॉडी, बी बी बी. नरसिम्हा. नरसिम्हा वो नहीं करते खून देने के बाद, खून देने के बाद एक गुड डे का और एक फ्रूटी का वो देते हैं, रसना का या फ्रूटी का वो टेट्रा पैक देते हैं, वो देना चाहिए. अब की बार तो पक्का देना ही चाहिए. चलो, so what do we have? We have 3 equations here, right? And they want us to find out the third equation, that is f2 of x. Yes, look at this. Equation 1, they are saying that it's x square plus 5x plus 3, 2 roots alpha and beta. Another equation, f1x, has 2 roots that are 87.5% less than alpha and beta. So what do we mean by 87.5% less than? That means they are 12.5%, correct, of alpha and beta. What is 12.5? 1/8. So if the roots alpha 1 beta 1 are 1/8 of alpha and beta, that means what should we do with the coefficients? Multiply with 8, correct? We have to multiply that with 8. But before that, hold on. What do we have? We have and 66 2/3 more than the roots of f2 of x. Yes, that means 1/8 of alpha and beta. These are what? 66 2/3 more than. So let's look at this. What do we mean by 66 2/3% more? That means 100 plus 66.66%, correct? That's nothing but 3/3 plus 2/3. That's 5/3 times. Yes, so what they're saying is alpha 1 beta 1 are equal to 5/3 of alpha 2 beta 2. That means alpha 2 beta 2 can be written as what? या फिर ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट ही कर लो. यस, अल्फा 1 बीटा 1 हमने लिख लिया था इसके फॉर्म में, वापस यहीं पे ये कर लो 5/3 टाइम्स अल्फा 2 बीटा 2. तो फाइनली अल्फा 2 बीटा 2 इज इक्वल टू 3/40 टाइम्स, करेक्ट? 3/40 टाइम्स अल्फा एंड बीटा. एंड वी नो दैट अगर रूट्स, इफ रूट्स गेट मल्टीप्लाइड बाय k, then the coefficients of x should basically be multiplied by 1/k inverse, है ना? तो अभी पहले इक्वेशन में f of x में जहां कहीं पर भी x है उसको रिप्लेस करके क्या कर लोगे? 40/3x लगा लोगे. That's it. So that's it. f2 of x would basically be what? 40/3x the whole square plus 5 times 40/3x plus 3 is equal to 0. So you'll have what? 1600/9x square plus 200/3x plus 3 is equal to 0. अब ये 9 हटाना है, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर लो पूरा. What will happen? 1600x square plus 9 होगा तो 3 cancel, 600x plus 9 is 27 is equal to 0. Here it is. This is your answer. So what's the deal here? The deal here is agar roots, if alpha beta gets multiplied with k, then x should be replaced with what? X by k. Uska inverse. That's it. Reciprocal, है ना? Got it?
Done. Hi Balram, long time. Got it. But this is the key. This is the key, guys. Agar root, if your root gets multiplied by k, then replace x with k ka inverse, reciprocal. Same logic when if it gets added, alpha, beta, अगर k से add होते हैं तो x को x minus k से substitute कर लो. Got it? Aisha, this is a concept. ये concept है, ठीक है. This is a concept that we've dealt with. एक बार try watching अपना quadratic equation का lectures, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर्स थोड़े से देखो, उसमें मैंने डिटेलली बताया, आई गेस सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, ठीक है. चलो ये वाला करो जल्दी, ये बहुत ही, बिकॉज दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप, तो मैं सोचा व्हाई नॉट. आयशा एक बार ट्राई करो वो वाला लेक्चर देखने का. अगर नहीं हो रहा है तो फिर I'll explain that. Okay? कल भी है, डोंट वरी, कल भी है. अगर नहीं हुआ तो कल वापस समझा देंगे. अच्छा तो कोई नहीं. रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कोई नहीं, हमारे साथ हो तब तक ठीक है. सुपर, वेरी गुड, सुपर यार. सॉरी 33 आयशा, 33 चेक करो एक बार, 2 बार भेज दिया. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट हैज बीन आस्क्ड. आ गया क्या गाइस? आ गया क्या? आ गया जैसा लग रहा. चलो ठीक है. All right, yeah, so see, let's do the general form first. General solution iska. How would you solve this generally, right? Replace this with a variable x. Since this is an infinitely long expression, क्या हो जाएगा? You can write this as 6 plus, वापस क्या हो रहा है? root 6 हो रहा है, correct? तो इसको मैं x लिख सकता हूँ. If this entire thing is x, then this is also x, है ना? अगर ये x है तो ये भी x है. Yes. So now what do you have? You have a quadratic equation in front of you. Square ले लो. X square is equal to, root हट जाएगा, 6 plus x. X square minus 6 minus x is equal to 0. Yeah, whatever. X square minus x minus 6 is equal to 0. What are the possible solutions? Plus 3 minus 2. Yes. अब ये since this is more number system based concept, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. दैट मीन्स 3. यस, x is equal to 3. दिस इज जनरल सोल्यूशन. अब इसमें यू कैन यूज अ क्विक शॉर्टकट. यस, वर्क्स व्हेन अ नंबर a keeps repeating under root. यस, अगर ऐसा कोई है आपका एक्सप्रेशन, ऐसा है रूट ए प्लस रूट ए ऐसा चलता चाह रहा है, अगर लाइक दिस, देन द सोल्यूशन फॉर दिस शुड बी इक्वल टू 4a plus 1 अंडर रूट प्लस 1 बाई 2. समझ रहे हो? गॉट इट? So all that you have to do is replace a with what? A यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. That's it. So replace this with 6. 6 into 4, 24 plus 1 by 2. Which is how much? 25. Root 25 is 5. 5 plus 1 is 6. 6 by 2 is equal to 3. है ना?
वही अगर ये रूट ए, इफ दिस वाज ऑफ द फॉर्म ए माइनस ए अगर माइनस में है तो देन इसका सोल्यूशन क्या होगा, सेम 4a+1 अंडर द रूट बट -1 दिस टाइम बाय 2. yes, got it. हाँ, प्रिंस, अनलेस एंड अनटिल दे मेंशन दैट इट्स अ नेगेटिव नंबर वी कंसिडर इट पॉजिटिव ना. तो जब भी अगर रूट 4 लेते हैं, व्हेन वी लुक एट रूट 4 वी कंसिडर दिस अकॉर्डिंग टू द नंबर्स एज 2 ओनली. नंबर सिस्टम के हिसाब से ये 2 ही होगा, राइट? गॉट इट. वी कंसिडर इट -2. वी वुड कंसिडर दिस एज -2 if we are looking at it algebraically. yes, algebraically इसका वैल्यू -2 भी हो सकता है, बट बाय नंबर सिस्टम इट्स 3 ओनली. ठीक है, मतलब पॉजिटिव ओनली. यस, ये ट्राई करो जल्दी. लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल मूव ऑन. मधु, image internet suspension for 16 months. What is that? Imagine internet suspension for 16 months. I wish. How blissful it would be, na? No, no nonsense. मतलब कितना मस्त रहेगा नहीं, एकदम सुपर्ब गाइस. वैल्यू ऑफ x here is 2. x is equal to 2. Beautiful. Correct answer. Oh no, Madhu, no. Yeah, wait, maybe. I mean, if a little bit, if you remove internet but add a little bit of human rights to that, maybe yes, maybe then I'm game. I don't want this I don't want, but this definitely can't live without it. Is it 1/2? Integral. Integral means what? It has to be integer. So it can't be 1/2. Simple as that. Yes. Now I just want to be treated as a human being. That's it. I don't want internet. I don't want internet. Just treat me like a human being. I'm game for it. Which apparently is not happening in JNK at all. So to jane do yaar, it is way too sensitive for us to be talking here about this, but this is what I feel. Like, give them a break. कर लो जितना आपको करना है उसके अराउंड, whatever you want to do around it, do it, but थोड़ा ब्रेक दे दो उनको. So here you can definitely just go crazy on it, because they're saying integral values try. 1 try kar lo, 2 try kar lo. Yes, because they want, see, this and this together must be integers. Yes, ये integer होना चाहिए, ये integer होना चाहिए, तभी इसको मिला के 7, जब when you subtract an integer from it, you would get another integer, है ना? Integer minus integer should give you another integer. That's the deal. So that's what you're looking for, कि कब वो integral value होगा, which is at 2. x equal to 2 पे क्या हो जाएगा? 20 minus 4 16, which is 4, plus 4 plus 5 9, which is 3. 4 plus 3 7, minus 7 is 0. Yes. The other alternative for this is थोड़ा सा रुला देगा वो. Yes, you'll have to take it to the other side. Take one of these to the other side, square करके करो. Yes, that's something that I wouldn't prefer, to be frank, है ना? तो उसको जाने दो. Otherwise, this is the best way to do it here. Yes, don't try this in the general form.
जनरल वे में करोगे तो बहुत पंगे हैं. You would have to go 10x minus 4 is equal to 7 minus 2x plus 5 का रूट. पंगे है ना, बहुत वांदे हैं यहाँ पे. डोंट डू इट. इसका होल स्क्वायर. Yes. So at this point it's only safe for you all to go for trial and error. अगर ये MCQ है, if this is MCQ then even better. MCQ है तो टीटा कर लो, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो. Yes, but don't go for the general solution for that. Clear? So let this be the last question then. Let this be the last question. Let me rewrite this. Y is equal to x minus 3 whole square minus 2x square is equal to 0. जल्दी करो, लास्ट है, फिर अगला सेशन है ना, आज नहीं है क्या? फिर भी चलो कोई नहीं. हेमलता, I just showed it to you. You will have to do 7 minus that value under the root whole square. You'll have to apply a minus b whole square on that, which is to be frank, very tedious task. Quickly try this. सुपर राहुल, ऑन पॉइंट बड़ी, ऑन पॉइंट. तो इसमें कुछ है ना, आंसर चॉइस है ना, एक आंसर चॉइस भी तो है इसमें. राइट विभोर, सुपर. So see, all these questions that we've seen are almost actual CAT questions only, right? And if you notice, most of these deal with a very simple concept of just basics. Yes, अगर आपके basics strong है, तो you can answer 9 out of 10 algebra questions. इसका मतलब ये नहीं कि 10 algebra questions आएंगे. आप लोग बोल देंगे कि सर ने ऐसे subtly like the एकदम से किसी को पता नहीं चला, उनने ऐसे बोल दिया कि 10 क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रा के. नहीं. या सो व्हाट डू वी नो? इफ a is positive then that quadratic equation y, which is ax square plus bx plus c, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? यहां पे क्या हो जाएगा? a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट. Yes, maximum value would not exist. On the other hand, if a is negative, अगर a नेगेटिव है तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में क्या सीन है? मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगा. मिनिमम वैल्यू इज लिटरली नेगेटिव इन्फिनिटी. मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे खुलेगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, मिनिमम नहीं रहेगा, है ना. इसका ग्राफ कैसे खुलेगा? ऐसे, उल्टा खुलेगा, है ना. इसका ग्राफ ऐसे होगा, तो हियर यू विल हैव द मिनिमम वैल्यू. गॉट इट? तो इसका मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? नेगेटिव इन्फिनिटी. y, ओपन दिस अप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज दिस? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y. नेगेटिव इन्फिनिटी. ठीक है आयशा, अरे यार पेशेंस. बट एनीवे, माई टाइम हियर इज ओवर. माई टाइम हियर इज ओवर. एज मच एज आईड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो चुका है. 5-6 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया हमने. या बट डोंट वरी, टुमारो वी आर डूइंग अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट. कल कर रहे हैं. Tomorrow we are doing algebra का second part, where we will be dealing with other parts, inequalities, logarithms, functions, है ना, ये सब कल देखेंगे. ठीक है.
I will send you the update here on the official group. कब जाएगा? Yes, it is 8 PM only. 8 PM only. 8 PM to 9 PM. आज हमने थोड़ा खींच लिया क्योंकि अगली सेशन नहीं है ना? Got it? Tane, thank you very much for being my unappointed, unassigned timekeeper. Tomorrow 8 PM guys. Tomorrow 8 PM. राहुल प्लेशर बड़ी प्लेशर। जियो रे बिहार के लाला। ऑलराइट, बाकी स्पेशल क्लासेस भी होने हैं गाइस, अभी और थोड़े स्पेशल क्लासेस भी होने हैं आप लोगों के। मैं सोच रहा हूँ एक ट्रिग्नोमेट्री पे करूँ एक सेशन, क्या बोलते हो? आओगे क्या आप लोग? इफ आई डू अ सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, वुड यू बी देयर? वुड यू कम फॉर दैट सेशन? कंसेंसस ले रहा हूं अभी, पूछ लेता हूं, मतलब सर्वे सेंड वाई फॉर यस, एन फॉर नो। नहीं तने, मैं मजाक कर रहा हूं यार। चिल, यू डोंट हैव टू टेक ऑल दिस इज क्लास बैंटर, ये चलेगा अपने बीच में। Sunidhi, thank you so much for coming and noticing only that part of the session. Very good. नंद किशोर बाबा क्या करें, मतलब नाचे? क्या करूं मैं फिर, नाचूं? पीएनसी पे हो चुका है प्रिंस, पीएनसी पे हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं। इवन ऑन स्पेशल वी हैव डन। ट्रिग्नोमेट्री पे अभी तक 2 वाई आए हैं। प्रिंस वी हैव डन विद पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी पे हमने यहाँ पे आई गेस ऑन यूट्यूब वी हैव डन अबाउट 7-8 लेक्चर्स। पीएनसी पे वी हैव डन गॉड नोज हाउ मेनी लेक्चर्स। ये चलते गया, ये तो रुका, खत्म ही नहीं हुआ, इसको जबरदस्ती खत्म करना पड़ा। हाँ, यहाँ पे करेंगे डेफिनेटली, वी विल डू मॉडर्न मैथ पे एक पूरा दिन करेंगे, राइट? वन एंटायर सेशन वुड बी ऑन मॉडर्न मैथ, दैट इज पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे एक पूरा सेशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन यस, प्रैक्टिस यस। मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे थियोरी सेशन थोड़ा सा कर ले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने टच ही नहीं किया था बिल्कुल भी। यू नेवर नो। या राइट सुनिधि, कोई नहीं चलेगा यार, टेंशन मत लो, वो करेंगे जो करेंगे। हाँ, नो इश्यूज प्रिंस, नो इश्यूज। यू कैन गो चेक आउट दीज सेशंस, ये वाले चेकआउट कर लो, यहीं पे प्लेलिस्ट भी बनी होगी, वीडियोस पे जाओ एंड चेक आउट दीज सेशंस आल्सो। ओके, चलो ठीक है, स्पेशल क्लासेस पे आना, मैं ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैं भेजूंगा, ठीक है? आई विल सेंड यू दी अपडेट ऑन इट कि क्या सीन है, कैसा क्या बन रहा है। यस, इफ यू हैवेंट ऑलरेडी फॉलोड मी ऑन Unacademy's लर्निंग ऐप, गो ahead and do that, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा फॉर माई अपकमिंग क्लासेस, है ना? यस, द रेस्ट आई विल सेंड इट हियर, ठीक है? एंड इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, इफ यू आर स्टिल लाइक नहीं सर थोड़ा सा ओमेट में थोड़ा सा, इफ यू आर अप्लाइंग, इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन एनमैट अगर आपका हो गया तो मेरे को स्कोर बताना, टेलीग्राम पे बता देना कि क्या स्कोर है, कैसा है, कितने लोग ले लिए और वापस लेने वाले हो, ये सब बात करेंगे, टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है? एंड इफ यू आर प्लानिंग ऑन गिविंग IIFT, ZAT, स्नैप या कोई भी अगर CETs वगैरह दे रहे हो आप, तो यू कैन स्टिल कंसिडर दिस। देयर विल बी स्पेसिफिक सेशंस फॉर देम ऑल्सो। ओमेट्स के लिए अलग स्पेसिफिक सेशंस भी होंगे, क्रैश कोर्स एंड ऑल दैट। There will be unlimited access to all live classes, recorded ones, downloadable ones. You will get notes for them. That means you don't have to go buying books and all that. And then there will be practice sessions like these. Yes, there will be theory sessions, last minute theory sessions. अगर कोई
रिविजन चाहिए वो, then you can interact with your favorite educators. There will be live polls and leaderboards जो आपको statistical information देगा. Test series होंगे definitely, analysis भी होगा especially for OMETs, है ना. And then there will be live doubt clearing sessions. अगर last minute आपके पास बहुत सारे doubts जमा हो चुके हैं तो भेज सकते हो वहाँ पे, है ना. Every fourth session is a live doubt clearing session, तो definitely make use of that. Use my referral code Surana live. ये है मेरा referral code Surana live. Use this for your discount, है ना. Same 10% का मिलेगा discount आपको. Every code gives you only 10%. 10 से ज़्यादा कोई code नहीं देगा आपको. So you can use that. You can pick any one of these packages, whatever you think is best for the kind of management entrance test you are planning on taking. Cool. CAT is the only focus now. No issues. कोई नहीं. Super Prince. Chalo. Alright, I'm gonna take a leave as well. Thank you very much for listening to my session. Thank you very much for being a part of this. I'll see you all tomorrow. Until then, keep yourself safe and happy and keep learning. Let's crack it.